अब हम देखेंगे अगर इस दोनों प्लेट के बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक यूज किया तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी। तो अभी सेकेंड, दैट इज कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर कैपेसिटर यूजिंग डाई इलेक्ट्रिक। तो अभी हमने जो पिछले पॉइंट में देखा, कैपेसिटी इज गिवन बाय C इज इक्वल्स टू A इप्सिलॉन 0 अपॉन D, where A is the area of the plate, epsilon 0 that is permittivity of the medium, D that is distance between the plates। अभी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स वही रहेगा, एरिया भी वही रहेगा, एप्सिलॉन 0 भी वही रहेगा, खाली हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऐड करने वाले हैं और उसकी वजह से कैपेसिटी चेंज हो जाएगी, जो होगी हम देखेंगे। लेकिन जो शुरू की कैपेसिटी C दिखाई थी वो अभी खाली उसका नोटेशन चेंज करेंगे। तो सी हियर इन डायग्राम, कैपेसिटेंस विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स। ये प्लेट एज इट इज बिफोर, दैट इज चार्ज प्लस Q इज गिवन टू द insulated plate and other plate is earth and charge minus Q. Now between the two plates slab is introduced, let T be the thickness of the slab। तो हमने पिछले पॉइंट में देखा था what is effect of electric field on the dielectric material। तो उसका क्या होता है, पोलराइजेशन होता है और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रिडक्शन होती है। तो यहां ये जो पॉजिटिव चार्ज दिया है प्लेट, इंसुलेटेड प्लेट को, उसकी वजह से ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसके नियरर फेस जो पॉजिटिव चार्ज के पास है, उसकी वजह से देयर विल बी नेगेटिव चार्ज on this side of the slab, that is on the left side, and automatically equal positive charge will be induced on the other face of the slab, and because of this again there is negative charge on the earthed plate and positive charge is escaped to the earth as it is earth। Now distance between the plate is D and thickness of the slab is given as small t। अभी ये पोलराइजेशन होगा तो इसका मतलब इसके अंदर भी थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन अभी बेसिकली डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो अभी ये जो इंसुलेटेड प्लेट और अर्थ प्लेट है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन अंदर जो स्लैब है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट मींस इट विल बी अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो इसको हम, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द स्लैब, दैट इज डिनोटेड एज EP, and electric field between the plate that is denoted as E0। So see here, consider a parallel plate capacitor with the two plate each of area A separated by distance small d, then capacitance of the capacitor is given by C0 is equals to A epsilon 0 upon D। तो फॉर्मूला तो वही है, खाली C0 नोटेशन दिया है। Let E0 be the electric field intensity between the plates before the introduction of dielectric slab। ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया है उसके पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होगा दैट इज डिनोटेड एज E0। Then potential difference between the plate is given as V is equals to E into D, then therefore it is V0 is equals to E0 into D। अब ये E0 क्या है, that is electric field which is given by E0 is equals to sigma upon epsilon 0 or Q upon A into epsilon 0, that is value of E0। Now let a dielectric slab of thickness small t, which is less than distance between the plates, is introduced between the plates of the capacitor। Then electric field E0 polarizes the dielectric, inducing charge minus Q on the left side of the slab and charge plus Q on the right side of the dielectric slab। Due to this, the electric field EP is set up inside the slab in the opposite direction of vector E0, and therefore now induced field is given by EP is equals to sigma P upon epsilon 0 or
QP upon A into epsilon 0. And the net field is nothing but difference between that two. That is the electric field between the plates and electric field due to the slab. So E is equals to E naught minus EP. But another one point जो हमने लास्ट ईयर में स्टडी किया है रिलेटेड टू डाइलेक्ट्रिक, दैट इज ई नॉट अपॉन ई नॉट माइनस ईपी इज इक्वल्स टू के, विच इज डाइलेक्ट्रिक, एंड देयरफॉर टेकिंग टर्म्स अदर साइड, सो ई नॉट माइनस ईपी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 अपॉन सॉरी ई नॉट अपॉन के. सो ये ई नॉट माइनस ईपी की वैल्यू हो गई, तो ये इधर यूज करने के बाद वी गेट E is equals to E naught upon K, where K is nothing but dielectric constant. Therefore, E is equals to E naught की वैल्यू यहां हमने ऑलरेडी निकाली है Q upon A into epsilon 0. So E is equals to Q upon A into epsilon 0 into K, or taking opposite side we get Q is equals to A into epsilon 0 into K into E, that is charge. अभी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बिटवीन द प्लेट्स दैट इज डिनोटेड बाय ई नॉट, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द इन द स्लैब दैट इज डिनोटेड बाय ईपी. ये जो ईपी है दिस इज फॉर डिस्टेंस टी, और ये ई नॉट है दैट इज फॉर डिस्टेंस रिमेनिंग डिस्टेंस. तो ये जो टी है उसके बाद रिमेनिंग डिस्टेंस होगा डी माइनस टी. सो द फील्ड ईपी एग्जिस्ट ओवर डिस्टेंस टी एंड फील्ड ई नॉट exists over remaining distance, that is d minus t. So potential difference between the plate is given by V is equals to E into distance. So potential difference between the plate is V is equals to E naught and a distance d minus t plus E into t, that is sorry EP into t it is. So that is for slab. Again replace that. So EP that is by E naught upon K. So V is equals to E naught in bracket D minus T plus E naught upon K into T. Taking E naught up outside. So V is equals to E naught in bracket D minus T plus T upon K. Again replacing value of E naught, V is equals to Q upon A epsilon 0 into this bracket as it is D minus T plus T upon K. And the capacitance is given by C is equals to Q upon V. So Q as it is, and value of potential that is Q upon A epsilon 0 into D minus T in bracket plus T upon K. Here Q get cancel. A epsilon 0 will come in the numerator. So C capacity C is equals to A epsilon 0 upon in bracket D minus T plus T by K. So this is the capacity of parallel plate capacitor when dielectric slab is introduced between the plates. तो स्टूडेंट्स हमने अभी कैपेसिटेंस के बारे में क्या क्या देखा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज given as E is equals to Q upon A epsilon 0 K, where Q is charge given to the plate, A that is the area of the plate, K dielectric constant, epsilon 0 permittivity of the medium. Also using this you can say Q is charge Q is equals to A epsilon 0 K into E. और पोटेंशियल क्या देखा है, V is equals to Q upon A epsilon 0 into D minus T plus T by K, where D is the distance between the plates and T is the thickness of dielectric slab. So also capacity C is equals to Q upon V. So using this value C is equals to A epsilon 0 divided by D minus T plus K T by K. So these are the expressions for parallel plate capacitor. तो अभी उसमें स्पेशल केसेस क्या क्या है देखिए. इफ द एंटायर स्पेस, मतलब क्या, ये जो बीच में दो प्लेट के बीच में हमने स्लैब रखा था ऐसे, तो इसका थिकनेस हमने टी देखा था, लेकिन
और ये डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स जो है वो डी कंसीडर किया था। लेकिन इफ द एंटायर स्पेस इज फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक, मतलब ये पूरा स्पेस इज फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक, तो ये थिकनेस डी इतना हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट टी इज इक्वल टू डी। तो ये इक्वल वैल्यू है, तो इधर यूज करने के बाद क्या होगा, टी इज इक्वल टू डी, मतलब ये टी डी माइनस डी ए जीरो हो जाएगा, और डी बाई के, तो ये के ऊपर ले सकते हैं, देयरफॉर सी इज इक्वल टू ए इप्सिलॉन जीरो के अपॉन डी, also making k separate in bracket a epsilon 0 upon d, and this is nothing but, if you remember, initial capacity of the capacitor, that is denoted by c naught. So c is equals to k into c naught, and k is dielectric constant, मतलब capacity k c is equals to k times the original capacity. So capacitance of the parallel plate capacitor increases k times as k is equals to c upon c naught. Second, if the capacitor is filled with n dielectric slabs, उसमें ये जो है सिंगल स्लैब की वजह, instead of that, suppose different slabs are there having different thickness, so that is thickness T1, T2, T3 dot Tn. तो this arrangement is equivalent to n capacitors in series. तो क्या हो गया, this is arrangement of capacitors in series. So therefore C is equals to A epsilon 0, और ये D के बदले क्या आएगा, T1 by K1 plus T2 by K2 plus dot Tn by Kn. That is condition for series. Third, if the arrangement consists of n capacitors in parallel with plate area A1, A2 dot An, different plate area, and plate separation is D, distance between the plates separation, that is small d as it is, then C is equals to epsilon 0 upon d in bracket area A1 into dielectric K1. ये जो है एरिया A1 और डाइलेक्ट्रिक K1 ये कॉमन रहेगा, epsilon upon d, so A1 K1 plus A2 K2 plus dot An Kn. Again, also if area is same, then A1 is equals to A2 dot is equals to An, so that is nothing but A upon N. So therefore C is equals to A into epsilon 0 divided by D into N in bracket only sum of dielectric constant, that is K1 plus K2 plus K3 dot Kn. And fourth, if the capacitor is filled with conducting slab, that is, you can say, conducting material, and for conducting material K is infinity, then capacity C is equals to D upon D minus T into C naught, that is original capacity. So thus capacitance increases by factor D upon D minus T. So these are the special cases related to capacity of parallel plate capacitor. Okay students, now we will discuss some more important points related to capacitors. See, points to remember regarding capacitance of capacitor. First, if there are n parallel plates, then there will be n minus 1 capacitors. Okay, see, suppose when there are two plates, we consider as this is positive plate and other will be negative plate. So when there are two plates, we consider as one capacitor. So if there are n plates, then definitely there will be n minus 1 capacitors. So if there are n parallel plates, then there will be n minus 1 capacitors. Hence, capacity is given by C is equals to n minus 1 into A epsilon 0 upon D. Or second, for a spherical capacitor consists of two concentric spherical conducting shells with inner and outer radii A and B respectively. मतलब क्या, सपोज स्पेरिकल कैपेसिटर ये ऐसा आउटर शेल है और ये इनर शेल है,
तो ये जो इनर सेल है उसकी रेडियस ए कंसीडर की है और जो आउटर शेल है उसकी रेडियस बी कंसीडर की है. देन कैपेसिटी इज गिवन बाय सी इज इक्वल टू, जनरली here हम a that is used for area of the capacitor. So as it is a spherical capacitor, so we definitely we can take area as 4 pi. So instead of a there is 4 pi epsilon 0 into ab upon a minus b. ये एक्चुअली ये डिवाइड बाय डी है. अभी ये डिस्टेंस मतलब क्या होगा, इस दोनों में, दो प्लेट में, स्पेरिकल शेल में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस लेना चाहिए. सो दैट इज नथिंग बट 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी, वो सिंप्लीफाई करके इन ब्रैकेट ए बी अपॉन ए माइनस बी. सो दैट इज कैपेसिटी ऑफ spherical capacitor. Then for a cylindrical capacitor consist of two coaxial cylindrical shells with radii of inner and outer cylinder A and B respectively. मतलब क्या, सपोज सिलिंड्रिकल मतलब ये ऐसा रहेगा इनर शेल जिसकी रेडियस हमने ए कंसीडर की है, और सिमिलरली आउटर सिलेंडर like this whose radius is given as b. So and its a length is taken as l. Then capacity is given by c is equals to 2 pi epsilon 0 l upon log b by a to the base e. So that is capacity for cylindrical capacitor. So these are the points we have to remember regarding different types of capacitor. Now let us see some examples. So first one, see, from the given figure, find the value of the capacitor C if equivalent capacitance between A and B is to be 1 microfarad. All other capacitors are in microfarad. So here is point A and here is point B. After A there is capacitor C that we have to find out its capacitance. Then here given as C1 8 microfarad, C2 4 microfarad, C3 1 microfarad, C4 4 microfarad and C5 4 microfarad. तो अभी इसमें फर्स्ट ये कंसीडर करते हैं C4 एंड C5 बोथ आर 4 एंड 4, ये पैरेलल में है और ये दोनों का अरेंजमेंट जो होगा इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड दिस C3 दे विल बी इन सीरीज. सिमिलरली इधर अगर इस साइड को आप देखोगे तो C1 एंड C2 दीज आर आल्सो इन सीरीज. सो C3 एंड इस दोनों का C4 एंड C5 का पैरेलल का इक्विवेलेंट सीरीज में जो होगा वो और इसका इक्विवेलेंट वो दोनों फिर से क्या होगा, पैरेलल में रहेगा. तो फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं C4 एंड C5 का पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट. सो C4 and C5 are in parallel, so equivalent capacitance Cp is equals to C4 plus C5, that is 4 plus 4 8 microfarad. यहां हम मिल गया 8 microfarad. उसके बाद इसका इक्विवेलेंट 8 और ये 1, ये जो है that is connected in series. So 8 microfarad and C3 are in series. So उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस 1 by CS is equals to 1 by 8 plus 1 by C3, that is C3 is 1, so that is equal to 1 into 8 divided by 1 plus 8 which is equals to 8 by 9 microfarad. तो ये इस C3 C4 C5 सभी का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल गया 8 by 9 माइक्रोफैरेड. सिमिलरली हम इसका भी निकालेंगे 8 एंड 4 का और वो दोनों का फिर से इक्विवेलेंट निकालेंगे. तो अब क्या करेंगे, ये C1 और C2 8 एंड 4 दीज आर इन
सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इसका रिजल्ट निकालेंगे एज 1/8 प्लस 1/4। सो सीरीज में है, सो 1/CS इज इक्वल्स टू 1/8 प्लस 1/4, दैट इज 8 प्लस 4 divided by 32, that is 12 by 32, and therefore CS is equals to 32 by 12. By simplifying, we get 8 by 3. So इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस मिल गया 8/3। अब ये 8/3 और इसका मिल गया है, इसका कैपेसिटेंस मिल गया है 8/9, तो ये दोनों पैरेलल में है। सो नेक्स्ट कैलकुलेशन, दैट इज फोर्थ पॉइंट इन दैट, Cp इज इक्वल्स टू, इस दोनों का एडिशन रहेगा, ये दो पैरेलल है, सो 8/3 एंड 8/9 इसके एडिशन, सो 8/3 प्लस 8/9, that is equals to 24/9 plus 8/9, which is 32/9 Cp। तो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल में जो कैपेसिटर्स कनेक्ट किए हैं उसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस मिल गया 32/9 माइक्रोफैरेड। अब क्या करना है, सी if equivalent capacitance between A and B is to be 1 microfarad, मतलब इस सभी कॉम्बिनेशन का आउटपुट जो A एंड B का है, A एंड B में वो 1 माइक्रोफैरड होना चाहिए, और इसी के लिए C कितना होना चाहिए, दैट इज इन सीरीज। सो इसका रिजल्ट है 32/9 और C, ये दोनों सीरीज में हो गए, और उसका रिजल्ट है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, दैट इज 1। सो देयरफॉर फिफ्थ पॉइंट, 32/9 and C are in series. So therefore 1/C plus 1/32/9 is equals to equivalent capacitance कितना दिया है 1 microfarad, that is 1/1. So therefore 1/C, or you can say CS, plus simplifying that 9/32 is equals to 1. So 1/CS is equals to 1 minus 9/32. That is equals to 32/9 minus 9/32, which is 23. 23/32. And therefore CS is equals to 32/23. So calculating in decimal point, we get 1.39 microfarad. So this is required capacitance given as C. So we will written as C is equals to, we will write as C is equals to, तो इसकी वैल्यू हो गई 1.39 माइक्रोफैरड। इसका मतलब क्या, यहां अगर 1.39 माइक्रोफैरड कैपेसिटर यूज किया तो ए एंड बी इस दोनों में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा उसकी वैल्यू होगी 1 माइक्रोफैरड। Now students, next point we will discuss displacement current. So see, this is simple circuit. Here a DC source is connected. In series there is key and capacitor. In capacitor, this side is charge plus Q is shown, and other side charge minus Q. This is positive of DC source, so current flow in this direction, and after capacitor this complete current
flows through the circuit. Now, there are two parts. First, this one, accept capacitor, that is called as conducting part, and second one, that is between the plates of the capacitor. So consider this is parallel plate capacitor with a dielectric as connected across the DC source in the conducting part of the circuit. Now, in conductor part of the circuit, there are free electrons. As it is metallic conductor, there are free electrons responsible for the flow of current. But between the plates of the capacitor, there are no free electrons as we have used a dielectric. So, in the conducting part of the circuit, free electrons are responsible for the flow of current, but between the plates of the capacitor, there are no free electrons for the conduction in the dielectric. Okay. Now, when key is closed, current flows through the circuit. So, when the circuit is closed, current flows through the circuit and attains maximum value as IC in finite time. So, current through the conducting part, that is denoted as IC. As the current passes through the leads of the capacitor, करंट जब यहां आने के बाद इसमें कैपेसिटर में आएगा, the electric field between the plates increases and causes polarization of the dielectric. तो हमने पहले भी देखा है, when there is electric field, then what happens? The dielectric material is a polarized effect of electric field we have seen. So because of that, the electric field between the plates increases and causes polarization of the dielectric. Thus, there is current in the dielectric due to movement of the bound charges. This current is called as displacement current, denoted as ID, or also called as charge separation current. Now, charge between the plates is given by, we have seen charge Q is equals to A epsilon 0 K into E. तो अभी यहाँ चार्ज और E ये दोनों वेरिएबल क्वांटिटी है. एरिया ऑफ द प्लेट कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक इज कांस्टेंट. सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी गेट dq by dt is equals to a epsilon 0 k into de by dt. Now this part dq by dt, that is nothing but current flowing through, rate of change of current charge flowing through the conductor, and that is we have denoted as IC. So dq by dt is equals to IC, and therefore using here IC is equals to A epsilon 0 K into dE by dt. So simplifying that, dE by dt is equals to IC upon A epsilon 0 K. Abhi A epsilon 0 K, this is already we have discussed as constant. So dE by dt, this rate of change of electric field, is directly proportional to IC. And what is IC? That is nothing but conduction current. So here we have denoted as IC. So rate of change of electric field is directly proportional to the conduction current or current flowing through the metallic conductor. So this is relation between electric field and current IC. Now similarly we will see relation between ID. Now see, if we have considered discussed this one equation, current IC is equals to A epsilon 0 K into dE by dt. अगर there is no any dielectric, मतलब in absence of any dielectric, we consider K as 1. So therefore, in that case, this current is nothing but due to the effect of electric field, which is called as ID. Therefore, we can denote as ID is equals to A epsilon 0 into d by dt. K is we have considered as 1. So this is, you can say, relation for displacement current ID. So ID is equals to A epsilon 0 into dE by dt.